So we continue our series of lectures on essays, and this part is on essays on education. Today's topic is also related to the main theme, and that is education. Education is the process to bring proper change in behavior. What is education? Education is the process to bring proper change in behavior. Please write it as a comment. Education is to bring proper change in behavior. Another definition of education is that education is the process which imparts and receives knowledge, skills, values, and attitude. So these are two definitions of education. There are so many other definitions also. I have given you articles and notes where you can find other definitions of education. But for now, remember these two definitions. Education is to bring proper change in behavior. Education is to impart, I-M-P-A-R-T. Impart means to give. Impart and receive knowledge, skills, values, and attitude. When we give or receive knowledge, skills, values, and attitude, so this is called education. This process is called education. Now today's topic is one of the CSS topics, that instruction in education is like engraving in stone. So here this is a metaphorical statement. Maybe it is a Moroccan proverb. As in today's notes it appears that it is a proverb from Morocco, that when you educate young people, so it is like engraving stone. Engrave means that you draw lines or make diagrams or shapes on the stones. Now stones are very hard, and when you draw lines or diagrams or shapes or some artwork or anything, it's a very complicated thing. So this topic has two dimensions. One dimension is that it is difficult to train young people, like it is difficult to engrave in stones. And the second dimension is that once you educate young people, it is like a permanent, strong, hard line in the stone. And then it remains the same. It doesn't change. Because line or drawing or shape or artwork or anything in the stone, it is permanent. It is permanent. You cannot remove it. It is not like a line on pen that you can delete it or you can erase it. Why I'm struggling so hard? Why I, as a teacher or trainer, I'm facing so many problems with you guys? Because your brain in the childhood, in the youth, was engraved by the traditional, dilapidated, downtrodden education system. Your primary education was bad. Your secondary education was bad. So today I am struggling hard. If you were educated in London or in Washington or Japan or South Korea, so maybe for my job was easy. I could discuss with you a lot of intellectual, philosophical, analytical, scientific, psychological, advanced topics. But I am
teaching you daily. He goes, she goes, I go, I can go, I could go, and spellings and punctuation. For the last so many months, we are discussing this thing, and it doesn't go inside your brain because your brain already has the lines of the past. And this is why unlearning is important for learning. Unlearning is important for learning. If you want to learn, so you have to remove what you have already learned in the past. Because in past, some religious people or some typical traditional teachers have given you instructions which are engraved like a stone, and now for me it is so difficult to draw new lines with critical thinking, with creativity, with the objectivity and all these things, because already you are full. That's why youth education is highly important. Sheikh Sadi says that Chu nihat mimar diwar kaj ta suraya miravad diwar kaj. That if you want to go to the sky and the first stone is tilted, is not straight, so the whole wall will go till sky and it will be tilted. It will not be straight. So when the foundation is wrong, the base is wrong, so then everything is wrong ahead. That's why primary education is highly essential, because there instruction means education. For example, we say medium of instruction. So medium of instruction means medium of education. Instructor means teacher. So when we teach or train or instruct youth, so these lines become very, very permanent, and it become part of their personality, and then later on it is so difficult to break it. So this was the main theme of this CSS essay topic related to education. So what do you think about this topic? Please drop a comment and explain this topic, that what does it mean. Let us practice a little. And if you have any question about essay, so you can also ask. So how you will start this topic? How you will introduce it? What do you think about this topic? Did you read the notes on this topic? If you have read the notes, so please write, I have read the notes. If you did not read, so write that I have not read the notes, but I will read the notes and prepare this topic. Write something. Hurry up, because I have changed now my style from teaching to training. So training means that I give you some task and you do it. I gave you notes, you read the notes. Now write on this topic so that I can evaluate it. I don't see your comments. Can you just write education? Can you write the spelling of education or not? Or it is very difficult. Write this topic of essay or just education word. Let me refresh my system. Yeah, okay. Imran Khan, education. Okay, thank you. It means that I'm audible and I can see your comments now. कुछ न कुछ लिखो. इस टॉपिक का मतलब ये है कि जो जवान नस्ल है, नौजवान, उसको जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, तालीम देते हैं, तो वो ऐसा है जैसे पत्थर में लकीर बनाना. अब पत्थर में लकीर बनाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब एक दफ़ा वो लकीर बन जाती है
तो फिर उसका मिटाना मुश्किल है। तो इस वजह से अनलर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। अगर आप सही लर्निंग चाहते हैं तो पुरानी चीजें भूल जाए। द आर्ट ऑफ मेमोरी इज टू फॉरगेट। द आर्ट ऑफ मेमोरी इज टू फॉरगेट। स्टूडेंट क्यों तरक्की नहीं करते? क्योंकि टीचर ही बोल रहा है, बस टीचर ही बता रहा है, वो भी उन्होंने भी कान इस तरह किया है जी तुम बोलो हम सुनेंगे। वो खुद तो कुछ करते नहीं है। तो जब क्लास में खुद नहीं करते तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेंगे? In this topic, instructions can be about anything instead of education, or it must to start this topic with education and talk about education. Actually, the instruction here means education. As I told you, instruction means education. Instructor means educator or teacher. वो एक और मीनिंग है इंस्ट्रक्शन का, हिदायत देना। लेकिन यहां जो इंस्ट्रक्शन का मतलब है वो है एजुकेशन। सो एजुकेटिंग यूथ इज लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन्स। नौजवानों को तालीम देना ऐसा है जैसे पत्थर में लकीर बनाना। जब एक दफा लकीर बन जाए तो उसको चेंज करना मुश्किल होता है। जब आपकी पर्सनैलिटी बन जाए, जब आपके ख्यालात बन जाए, तो बाद में उसका चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। देयर आर ओनली 3 ways टू चेंज लेटर: मेडिटेशन, रेपिटेशन एंड कंपनी ऑफ नाइस लाइक माइंडेड पीपल। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पर आपको चेंज कर सकते हैं, बाकी कोई तरीका नहीं है। यूथ इज अ टाइम व्हेन पर्सन्स आर मोर impressionable and open to learning. Just as stone is malleable when first carved, young minds are receptive to knowledge and values. Very good. ये अगर आपने खुद लिखा है ना तो शाबाश, एक्सलेंट। इस टॉपिक पे मैंने आपको आउटलाइन भी दी है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है और कुछ पैराग्राफ भी दी है, तो उसको पढ़े। Nurturing the seedlings provide shady trees that are fruitful and green. Trees with shadows, वो ज्यादा बेहतर होगा। Shady का थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग भी होता है। Trees with shadows that are green, that are fruitful and green, that are with fruits and they are green. Fruitful का एक और भी मीनिंग है, तो वो उर्दू वाला फलदार नहीं है, with fruits. In a similar fashion, children must be nurtured as they become the ones who stand at the helm of affairs. Excellent, Hussein. Very good. Actually, I'm telling you a very important point कि अपने आप को ऐसे माहौल से बचाए कि आपके ब्रेन पे गलत चीजें चली जाए, क्योंकि ये लर्निंग, अनलर्निंग, फिर लर्निंग बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे माहौल में मत जाए कि जहां आप ऐसी चीजें सीख जाए। मतलब मौलवियों को सारा दिन सुनना, वो क्या कहते हैं आपको? कुछ भी नहीं कहते। सोशल मीडिया का सारे दिन स्क्रोलिंग करना, ये फजूल काम है, लेकिन आपके ब्रेन में चीजें चली जाती है। फिर उस ब्रेन को साफ करना बड़ा मुश्किल होता है। ये इस टॉपिक का मतलब है। शुरू से बंदा अच्छा एजुकेशन, क्यों ये लोग अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में दाखिल करते हैं? ताकि इनका स्टार्ट ठीक हो जाए, बाद में उनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। Noshirwan, Pakistan faces a high dropout rate, particularly at the secondary level. Despite these challenges, Pakistan has made progress in increasing enrollment rates and there is a growing emphasis on vocational and technical education. हाँ, क्यों CSS में लोग 0 मार्क्स लेते हैं? 0 ऐसे में 0 मार्क्स पे लोग लेते हैं, 2 मार्क्स पे लेते हैं, 2, 3 भी लेते हैं, 5 भी लेते हैं। क्यों? वो समझे कि जी मैंने तो 50 पेजेस लिखे हैं, लेकिन एग्जामिनर उसको 2 मार्क्स देते हैं। क्योंकि ऊपर एजुकेशन देखे ना या स्टूडेंट देखे, वो शुरू हो जाते हैं जी, जो भी उनके जहन में एजुकेशन के बारे में है लिख लेते हैं।
जिसने कि नौशेरवान ने लिखा है। तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है, लेकिन ये टॉपिक ये नहीं है। आपने टॉपिक पे नहीं लिखा। अंग्रेजी लिखी है आपने, प्रैक्टिस आपका ठीक है, ग्रामर भी ठीक है, इसमें गलतियां भी नहीं है, लेकिन एग्जामिनर आपको इस पे 0 मार्क्स इसलिए देगा कि ये टॉपिक पे नहीं है। आपने रियलिटी बताई है, सही बात की है, ग्रामर भी ठीक है, लेकिन मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये रिलेवेंट नहीं है, ये टॉपिक पे नहीं है। एग्जामिनर को सबसे ज्यादा जो पसंदीदा चीज है वो है रिलेवेंसी, कि क्या आप टॉपिक के मुताबिक लिख रहे हैं या अपना नॉलेज मुझे दिखा रहे हैं। जो तुम्हें आता है सारा तुम मुझे दिखाते हो। Imran Khan, the saying, instruction in youth is like engraving in stone, refers to the lasting impact of early education on a person's character and behavior. It highlights the importance of imparting the right knowledge and values to young people as they are foundation of their future growth and development. The early years of life are crucial in shaping their personality, character and behavior. Excellent, very good. अब जो आज मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसको पढ़े ताकि आप में मजीद गहराई आ जाए। एक्सलेंट इमरान खान। सना खान, a young child is like mud and society can mold it in any shape. Their early training will stay with them for lifetime. Therefore, it is important to teach young child how. अपनी बात पूरी नहीं की है। Therefore, it is important to teach young child या young children with the quality education. कोई चीज आगे बोलो ना कि क्या टीच करें। इंपॉर्टेंट टू टीच तो है, लेकिन कौन सा टीचिंग। सईद अहमद, It is challenging to engrave youth because of the outdated system of education in Pakistan. अच्छा, ये जो टॉपिक ना इसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, ये पाकिस्तान का टॉपिक नहीं है, ये जनरल टॉपिक है। हाँ, बॉडी पैराग्राफ्स नीचे जो है आप पाकिस्तान को एज ए एग्जाम्पल 2-3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखे कि स्टार्ट में, इंट्रोडक्शन में कभी भी पाकिस्तान, इस्लाम ये चीजें मत लिखा करे, क्योंकि हमारे जहन में तो यही है ना, पाकिस्तान है, इस्लाम है, यही हमें आता है और तो हमें कुछ आता नहीं है। तो एग्जामिनर को ये पसंद नहीं होता। आप जनरल शुरू करें और बाद में बेशक इस्लाम की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, किसी और चीज की बात करें, स्टार्ट में ना करें, क्योंकि एग्जामिनर समझेगा कि ये टॉपिक उसने समझा ही नहीं है। टॉपिक पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान की एग्जाम्पल दे दे, हिंदुस्तान का दे दे, अमेरिका का दे दे, जापान का दे दे, कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में, स्टार्ट में नहीं, ताकि आपका इंप्रेशन गलत ना जाए। The idea that the lessons and guidance provided during a person's youth can leave a lasting mark on their character and choices throughout life. तो कंपेरिजन, अब ये कॉपी पेस्ट ना करें प्लीज, अपनी लिखाई करे और अभी टाइप करे। कहीं और पहले से आपने टाइप किया है तो वो भी ठीक है, लेकिन क्यों ये लोग पास नहीं होते? वो आराम से अपने कमरे में बैठ के लिखते हैं और फिर टीचर को भेजते हैं और टीचर जो है वो उसको इवैल्यूएट करता है। तो नहीं, ये जो प्रेशर का माहौल है ना, कि मैं भी देख रहा हूं, लोग भी देख रहे हैं, अभी अभी आप लिख रहे हैं, यही प्रेशर आप एग्जाम में होगा। तो कॉपी पेस्ट न किया करे, आराम से बैठ के, ठीक है कभी कभी आप आराम से बैठ के भी लिखा करें। क्यों लोग फेल होते हैं, पूरा पूरा महीना लगाते हैं कि इसे लिखते हैं, फिर किसी को बेचते हैं, फिर वो इवैल्यूएट करता है, वो समझते कि मेरा काम हो गया। इस तरह नहीं होता, वो तो आप अपने कंफर्ट जोन में है। आप प्रेशर के अंदर कार्रवाई करें। क्यों मैं आपको बार बार कहता हूं सेफ टू में आया करें, सेफ टू में आया करें, क्योंकि इसमें प्रेशर होता है, आपको फेस करना होता है, लोग आपको देखते हैं। तो आप जो है हाइबरनेशन में या किसी सुराख में, किसी गार में नहीं बन सकते, आपको फ्रंट पे आना पड़ेगा,
फिर आपकी पर्सनैलिटी बनेगी. Yeah, your paragraph is okay. Excellent. If there is any problem, so I will be telling you. So excellent, guys. It was very good practice and discussion. Now please go immediately to today's two classes notes, because I have finished philosophy, I have finished IR, I have finished spirituality. I think there is one topic in spirituality remaining, but I have done the whole course. So tomorrow we will finish. Essay topics are remaining, but you people are not cooperating with me. So we will continue the essay topics next month. Tomorrow we have definitely class. So all the best. Take care.